Okay, now that we've reviewed all the important concepts, let's just briefly answer these questions. Um, they are asking you to write four differences between streamline and turbulent flow. You can phrase these main points as per your liking, but these are the four basic differences. Streamline is regular and smooth. Turbulent, on the other hand, is irregular and unsteady. I've already mentioned that streamline में velocity of the fluid is less than the critical velocity. Critical velocity is the threshold value. अगर फ्लूइड की स्पीड इससे कम है तो इट वुड फॉलो स्ट्रीमलाइन मोशन, और अगर फ्लूइड की वेलोसिटी इससे एक्सीड कर गई है तो फिर दी फ्लो विल बिकम टर्ब्यूलेंट, फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाएंगी. इन स्ट्रीमलाइन फ्लो दी पाथ कैन बी ट्रेस्ड, बिकॉज हम उसे डिफाइन नहीं ऐसे करते ना. अगर कोई एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है तो अब पहले वाले पॉइंट पे आने वाला हर अगला पार्टिकल वही सेम पाथ ट्रेस करेगा जो पिछले वाले ने किया था. when it comes to turbulent flow, path cannot be traced, right? You cannot be certain कि अच्छा अब पार्टिकल यही वाला पाथ फॉलो करेगा. एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो में एज वी हैव डिस्कस्ड के imaginary lines होती हैं, right, by the path traced by the particles, and these streamlines do not cross each other. जैसे हमने आगे एक एग्जांपल भी देखी थी तो उसमें हमने ऐसे देखा था ना कि अगर यहाँ पर स्ट्रीम लाइंस थी और आगे जाकर अगर एरिया कम हो रहा था तो ये स्ट्रीम लाइंस क्लोजर आ रही थी टू शो दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड हैज इंक्रीज्ड इन दिस रीजन. लेकिन स्टिल हमने ये नहीं था देखा कि ये स्ट्रीम लाइंस जो है ये आपस में इंटरसेक्ट करने लगी या ये क्रॉस कर रही थी, right? This is the property of a streamline flow. These streamlines do not cross. When it comes to turbulent flow, particle की trajectory जो है वो overlap करती है. So you can say that the layers might mix together via swirls. Now they are asking you to explain Bernoulli's effect and write its equation. Bernoulli effect क्या है? Theorem में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था it relates के किसी भी fluid का pressure and उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हमने यहाँ पर मिलाकर डेंसिटी का नाम दे दिया था, एंड इट्स किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको अगेन यहाँ पर हमने मिलाकर डेंसिटी का नाम दे दिया था. Their sum remains constant, right? That is, total energy per unit volume of the fluid remains constant. So you'd say that the total mechanical energy of moving fluid, that is the gravitational potential energy of elevation, because it depends on the height, right? And kinetic energy of fluid motion, because it depends on velocity, and the energy associated with the fluid pressure, they remains constant. हम ये नहीं कह रहे कि gravitational potential energy constant रहेगी, नहीं, during the flow ये change हो जाएगी अगर दो different points हम consider कर रहे होंगे. हम ये भी नहीं कह रहे कि velocity will remain same या kinetic energy will remain conserved. No, kinetic energy भी change हो जाएगी अगर जैसे यहाँ पर narrow हो रहा है या अगर वो wide हो रहा है. We are just saying कि इन तीनों का sum will remain constant. एंड आपको इक्वेशन लिखने को कहा है तो यू जस्ट राइट दिस इक्वेशन, और चाहें तो डेंसिटी के टर्म्स में लिख दें. यू राइट पी प्लस रॉ जी एच प्लस हाफ रॉ वी स्क्वेयर, विद दिस रॉ इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड. देन राइट any two necessary conditions for Bernoulli's effect. ये आपसे बर्नौलीज इफेक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन पूछें, ये आपसे कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए पूछें, टॉरिचली एक्सपेरिमेंट के लिए, वेंचुरी ट्यूब के लिए, जो भी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली या कंटिन्यूटी जिसके लिए भी आपसे पूछ लें, आपने बस आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस को कोट कर देना है, राइट? यू वुड से दैट द फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल, दैट इज इट्स डेंसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट, the fluid should follow streamline motion, steady flow देना चाहिए, and the fluid should be non-viscous. That is, the internal resistance between the layers of fluid should be negligible. Then आपसे कह रहे हैं show that Bernoulli's equation from the for the venturi meter reduces to this one. You have to start from Bernoulli's equation, right? ये आपको ना भी बताते कि आपको Bernoulli से start करना है तब भी आपको पता होना चाहिए था. क्यों? क्योंकि they've mentioned pressure, they've mentioned velocity, and they've mentioned height as well. So there is this only equation, Bernoulli's equation, which relates all three of them. And क्योंकि they've mentioned two different points, point 1 and point 2, इसका मतलब है अब हमें कांस्टेंट के टर्म्स में नहीं, इक्वल के टर्म्स में लिखनी है, जिसमें एक तरफ पॉइंट 1 के लिए हम मेंशन करेंगे और दूसरी तरफ के पॉइंट 2 के लिए मेंशन कर देंगे, राइट? इट इज हाफ रॉ v1 स्क्वायर इक्वल्स p2 प्लस रॉ gh2 प्लस हाफ रॉ v2 स्क्वायर.
Why did I not write the subscript with density? Because again हम ideal fluid को consider करें and ideal fluid की तो density same रहती है, भले आप point 1 पे consider कर रहे हैं fluid को या point 2 पर. तो rho 1 equals rho 2, हमने उसको simply rho से replace कर दिया. When it comes to gravity, gravity भी नहीं change हो रही, एक तो horizontal level है right, और फिर उन्होंने mention भी नहीं किया, तो जो variables थे उनके साथ हमने 1 और 2 का subscript लगा दिया. See, they've mentioned कि यहाँ पर pressure P1 है, यहाँ पर velocity V1 है, यहाँ पर pressure P2 है, and at this point the velocity is V2, and it is quite evident from this question itself कि हमें final answer independent of height present करना है, right? And as I've already mentioned कि इन तीन वेरिएबल्स में से एट अ टाइम हम किसी दो को कंसिडर करते हैं और हम किसी तीसरे को कोई भी assumption लगाकर ignore कर देते हैं. In this case, it of course is the height. So we'll take the assumption that the difference in height is very small. That is, it is negligible because these 2 points are lying very close in terms of their vertical distance with each other. So we'd say that H1 is almost equals to H2, and therefore we can say that rho g H1 is almost equals to rho g H2. So we'll eliminate this factor from here. The equation will reduce to P1 plus half rho V1 square equals P2 plus half rho V2 square, and we'll arrange this equation जो question में पूछा है उसके हिसाब से. We'll keep the pressure at one side and we'll move the factor for this density and velocity on the other side. This is V2 square, and this whole factor when moved to the right side will give you negative of half rho V1 square, and this P2 when moved to the left side will give you minus P2. See, this is the same equation. बस आपने क्या किया, आपने इस half rho को constant ले लिया, and यहाँ पर आपके पास difference आ गया V2 square minus V1 square. This is what you were supposed to prove, right? Then they are saying a rocket is a missile, spacecraft, aircraft, or other vehicles that obtains thrust from a rocket engine. In all rockets, the exhaust is formed entirely from propellants carried within the rocket before use. Given diagram shows a rocket propellant. On the basis of the equation of continuity, describe the motion of rocket. Rocket के motion को equation of continuity के terms में, because of course it involves velocity, right, and the narrow region as well. और साथ में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टर्म्स में हम बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्रिंसिपल क्या है, रॉकेट के अंदर यू हैव फ्यूल विच व्हेन बर्न्स एंड इज एक्सपेल्ड, तो उस फ्यूल का अपना कुछ ना कुछ मास है और उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है जब आप उसको बर्न करके गैशियस फॉर्म में एक्सपेल करवा रहे हैं, राइट? जैसे वो फ्यूल गैशियस फॉर्म में बर्न होगा, इसका मतलब है उसका जो भी अपना मोमेंटम था, अब वो फ्यूल क्योंकि रॉकेट को लीव कर गया, तो आप कहेंगे देयर इज दिस चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? लेकिन हमें तो पता है मोमेंटम शुड रिमेन कंजर्व, लॉ है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो हम कहेंगे इक्वल चेंज इन मोमेंटम आना चाहिए रॉकेट में, राइट? इक्वल रेट पर फिर रॉकेट का भी मोमेंटम चेंज होना चाहिए, एंड हमें पता है दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स. तो अगर मैं कह रही हूँ डिपेंडिंग ऑन जो गैसेस एक्सपेल हो रही हैं उनका मोमेंटम क्या था, उसके हिसाब से इक्वल रेट पर रॉकेट का मोमेंटम चेंज होना चाहिए. दैट इज रॉकेट एक कांस्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट? और हमें तो पता है जब फोर्स कांस्टेंट है तो फिर हम तो अज्यूम कर लेते हैं ना कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है, लेकिन वो तब होता है जब मास हमारे पास कांस्टेंट होता है. तो अगर मैं कहती हूँ फोर्स कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज कर रही है, तो फिर यकीनन आपका सिस्टम जो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी कांस्टेंट होगा. लेकिन दिस डज नॉट वर्क दिस वे हियर, बिकॉज इस केस में हमारे पास सिस्टम क्या है, सिस्टम रॉकेट नहीं है, सिस्टम इज रॉकेट प्लस द फ्यूल, राइट? जैसे जैसे रॉकेट अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, रॉकेट का अपना मास तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूल जब बर्न होकर एक्सपेल हो रहा है तो फ्यूल का मास तो कम होता जा रहा है. इन अदर वर्ड्स ये जो हमारा कंप्लीट सिस्टम है, सिस्टम का मास कम होता जा रहा है. और हमें तो पता है मास एंड एक्सेलरेशन आर इनवर्सली रिलेटेड. अगर मास कम हो रहा है तो आपका सिस्टम कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा, इन दो अलग अलग फैक्टर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. हम कहेंगे इवन दो रॉकेट कांस्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बट इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इट्स एक्सेलरेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग.
I hope this makes sense. Then they've asked you to define a streamline and turbulent flow, which I believe is not at all difficult for you guys. बस उसको wordings में लिख दें कि एक में जो है वो same path को follow करता है और दूसरे में path आप उसका trace नहीं कर पाते, right? And write any two conditions necessary for turbulent flow. आप बस ये जहन में रखें, turbulent flow को डिफाइन ही आप ऐसे करते हैं ना, इट इज इरेगुलर फ्लो, राइट, जिसमें आपके पास फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं, तो एक पॉइंट तो आप ये बना देंगे और फिर सेकंड पॉइंट आप वेलोसिटी वाला मेंशन कर दें जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, राइट। यू कुड राइट के व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए इरेगुलर फ्लो होना चाहिए और साथ में वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, velocity should be greater than critical velocity और फिर irregular mention कर दें। Then water flows at a speed of 7 meters per second through a pipe whose internal diameter is 6 centimeters. Uh, this is the pipe with a certain area, certain diameter, this length, right? 6 centimeters. आपसे कह रहे हैं इस पॉइंट पर जो वाटर की स्पीड है it is 7 meters per second, 6 centimeters and the speed is 7 meters per second. And आपसे कह रहे हैं diameter of nozzle calculate करें जब water is coming out at a speed of 27 meters per second. See, speed increase हो गई है, right? So यकीनन आगे जाकर कहीं पर area decrease हो रहा होगा, ठीक है। आपको वो smaller area find out करना है जिस पर speed is 27 meters per second. My bad, area नहीं, आपको वो diameter ही find out करना है, ठीक। तो हम कहेंगे स्पीड को रिलेट करना है डायमीटर से। हमें तो बर्नौलीज इक्वेशन पता है, राइट, विच सेज a1 v1 equals a2 v2. We are to calculate diameter. Is there a way we can rewrite this equation in terms of diameter? When it comes to area, we can write it in terms of diameter as well, because area is pi r square and this v1 as it is, and pi r2 square and this v2 as it is, right? What we can do here is, यहाँ पर अभी हमने radius लिखा, but we need diameter. We know that diameter when divided with 2 gives us radius, right? So we can rewrite this radius in terms of diameter. We'll write d by 2, and since it was a1 we wrote r1 and we are to follow it with d1 square v1 equals pi r2 की जगह लिख दें d2 over 2 square and this v2. This pi gets cancelled with this pi, इस square को अंदर move करवाएं दोनों पर, this will become d1 square over 4 v1 equals d2 square over 4 v2. This 4 gets cancelled with this 4. This is the equation in terms of velocity and diameter. And since you are to calculate the diameter at the second point, this d2 is what we need to calculate. Let's just rewrite this equation and make this diameter the subject of our equation. This becomes d1 square v1 over d2 is what we need to calculate, right? v2. This is the equation for d2 square, but we have to calculate d2, right? So we'll take a square root here. Just put in the values here. d1 is 6 centimeters square. v1 was 7 meters per second. And then we have v2 which is 27 meters per second and this root here. आप ये सोच सकते थे कि वेलोसिटी इन्होंने मीटर्स पर सेकंड में दी है, डायमीटर तो हमने सेंटीमीटर में प्लेस कर दिया। वी नीड टू स्टिक टू अ यूनिट सिस्टम, राइट, स्टैंडर्ड में रखना चाहिए था सारा कुछ। आप करना चाहें तो कर लें, यू कैन कन्वर्ट दिस डायमीटर इनटू मीटर हियर बाय डिवाइडिंग इट विद 100, दिस बिकम्स 0.06 मीटर, बट इधर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज this equation is making it clear. This meter per second gets cancelled with this meter per second. The unit you will get is under root centimeter square. This centimeter square when gets out of the root gives you centimeter, right? So अगर आप यहाँ पर एरिया को सेंटीमीटर में रखते हैं, कन्वर्ट नहीं करते, तो बस आपका फाइनल आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। एंड यू इफ यू आर टू कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर तो फिर बस फाइनल आंसर मीटर्स में आ जाएगा। आप कन्वर्जन फैक्टर लगाकर भी देख सकते हैं, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा मीटर्स में। उस मीटर्स को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो एग्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है, राइट? सो जस्ट मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज, like simplify this expression and you'll get to know the final answer.
which I am leaving it here for you guys. Now, consider water droplets are falling vertically from a cloud. What will be the direction of air drag on the water droplets as they fall? Droplets are falling downward. Drag होता क्या है? Air drag is the force of friction, resistance की force. Friction वो नहीं which is between the layers of fluid. No, air drag is the resistance offered by the fluid when an object moves through the fluid. यहाँ पर जो हम air drag की बात कर रहे हैं, it is the resistance offered by the air against the fall of this water here. So if this water is falling downward, तो air drag की direction क्या होनी चाहिए? It should be upward because ये oppose करेगी, right? As the water droplet falls, their speed increases. हमने ये पढ़ा था जैसे जैसे वो downward move करेगा, gravitational acceleration की वजह से इसकी speed बढ़ती जाएगी. Will the air force on the water droplet increase or decrease? जब मैंने ये point बताया था MCQ में तो I mentioned कि drag is directly related to the speed of object. Of course वो medium पर भी depend करती है but object की speed पर भी depend करती है. As the speed keeps on increasing, the drag will follow the same. Drag force भी increase करती जाएगी. Write the equation describing the net force on water droplet as it continues to fall. Downward है हमारे पास weight which is mg. अपवर्ड है हमारे पास ड्रैग फोर्स. ड्यूरिंग दी जर्नी जब तक टर्मिनल वेलोसिटी नहीं रीच हो जाती हमें पता है वेट इज कांस्टेंट और ये ड्रैग के मुकाबले में ग्रेटर है. तो नेट फोर्स हम कैसे लिखते हैं? ग्रेटर माइनस स्मॉलर. सो यू विल राइट वेट माइनस ड्रैग फोर्स. दिस इज द नेट फोर्स हियर. और आप इसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं. वेट को आप mg लिख लें. ड्रैग फोर्स की जगह यू कुड यूज 6 pi eta rv. This is the expression for net force. How will the water droplet achieve terminal velocity? वही same point जब start होगा velocity is zero, drag force भी zero है but कुछ ना कुछ downward weight है which is constant. As it keeps moving downward, weight तो constant रहेगा इसलिए downward force constant है लेकिन drag increase होता जाए. The velocity keeps increasing due to positive gravitational acceleration. See, it would keep on increasing. And finally, a point will reach where this drag force becomes equal to the weight of the object. That is, these two forces being equal in magnitude and opposite in direction will cancel out each other's effect, and we'd say that the resultant force will become zero because ये दोनों बराबर हो गए, their difference will give you zero. You'd say that net force at this point is zero. When we say net force is zero, it means acceleration is zero. Acceleration is nothing but rate of change of velocity. So we'd say that change of velocity is zero. In other words, we can say that the velocity is constant. This constant velocity is called terminal velocity. यहाँ तक आने तक तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही थी, राइट? क्योंकि अभी तक वेट और ड्रैग बराबर नहीं हुए थे. लेकिन एक बार वेट और ड्रैग बराबर हो गया, इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, this velocity will be called terminal velocity और ऑब्जेक्ट अपनी बाकी की जर्नी इसी वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू करेगा even when gravity अभी भी एक्ट कर रही है. Then in the given diagram, a spherical ball of mass m and radius r is falling freely in a cylinder filled with honey when the magnitude of drag force F becomes zero against the weight of the spherical ball. That is वो point आ गया जिसमें इन दोनों का difference zero हो गया. Then the ball will fall with a constant velocity v. Derive an expression for the constant velocity of the ball using Stokes law. वो अभी हमने ऊपर MCQ solve करते हुए इसको आंसर किया था. We'll start with this equation that weight equals drag force, right? और फिर mass को हम density के terms में रख देंगे और volume हम sphere का place करेंगे, rearrange करेंगे और final equation आ जाएगी density, gravity, radius इन सब के terms में. By looking at the given diagram of a pipe, write an appropriate example for the fluid flow. See, they've mentioned different points. These different points have different pressure, see, different height, and different velocity as well because area different हो गया. कौन सी equation है which relates all these physical variables? It is no doubt Bernoulli's equation. You'd write, see, अब इन्होंने multiple points mention किए ना, 2 points, तो आप constant वाले terms में ना लिखें, आप 1 और 2 के terms में ही लिखें. You'll write P1 plus rho GH1 plus half rho V1 square equals P2
plus rho g H2 plus half rho V2 square. Then, to understand features of fluid in motion, the behavior of fluid should satisfy three conditions. Mention those three conditions. वही तीन conditions जो एक ideal fluid की हैं, incompressible, non-viscous, steady flow. Relate in 3 points the equation of continuity with the propulsion of rocket. वही जो अभी ऊपर हमने fuel का burn होना और जो momentum का change आना और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होना भी हमने मेंशन किया था. यू जस्ट हैव टू आंसर दिस इन टर्म्स ऑफ दोज 3 points. I hope it made sense. Till the next video, Allah Hafiz.